Hello everyone. So I hope that whatever is covered till now is clear with you. And in this only first question we have done in this exercise means there are three parts of this particular question that we are solving. Right. So first one we have done. Answer number 2. First one we have done. Second one I told you to do on your own. Okay. So now let us solve third one. Okay. F of x is equal to x square minus 1, that is given. It is given f of x is equal to x square minus 1 and x belongs to 1 comma 2. ठीक है, x belongs to closed interval 1 comma 2. Okay, what we are supposed to do? So we are supposed to verify, means same thing that we were doing, right, for Rolle's theorem. Now listen to me very carefully. First of all, we are going to prove that whether this particular function is applicable, means Rolle's theorem is applicable for this particular function or not, right? So mainly there are three conditions, so all the three conditions we will check. But before checking, you see what type of function it is. It is a polynomial function. So you know that polynomial function is always continuous and differentiable, right? We all know that polynomial function is always continuous and it is differentiable. So first 2 points that are clear, that is the given particular function is continuous. Okay, now second thing, that is differentiable. Okay, yes. See, we can do the differentiation, x square minus 1, we can do 2x, that is our differentiation. So first both the points are clear. Then we will find third point, f of 1 and f of 2. F of a must be equal with f of b. See here, a is equal to 1 and b is equal to 2. Right, see I'm going to write over here. You have to write the given function is continuous because f of x is equal to x square minus 1 and it is a polynomial function and it is continuous in the open in the interval. Okay, in the closed interval, this interval 1 comma 2. Now second one. Okay, third one. F of 1 square 1 minus 1 0. F of 2 3. But here we see that f of 1 and f of 2 are not equal. First two conditions are satisfied, but third one is not satisfied. Therefore you write, therefore Rolle's theorem is not applicable for the particular function. Okay, now let us prove the converse. Okay, I hope that it is clear. This particular function, third one, f of x is equal to x square minus 1, where x belongs to 1 comma 2. Yes, it is continuous because it is a polynomial function. Second, yes, it is differentiable in the interval 1 comma 2. Third one, f of 1, you find f of 1 square 1 minus 1 0, f of 1 is 0. F of 2 square 4 minus 1 3. These both are not equal. Therefore for this particular function Rolle's theorem is not applicable. Now in this question only we have to prove, means we have to discuss about the converse of Rolle's theorem, right? So for converse I told you that if there is one point we find C which is in the interval, see like this way, we have to do one thing, f of x is equal to x square minus 1.
Okay, so first we will do differentiation of f of x, that is f dash of x. X square minus 1 differentiation is 2x minus 0, that is 2x only. Now we have to find one point that is equal to 0. So let 2x is equal to 0, x equal to 0 by 2, x equal to 0. ठीक है, but that 0 is not in between 1 comma 2, therefore converse is not applicable. Okay, therefore converse is not true. If this point would be in interval, अगर ये satisfy हो जाता है यहाँ पे, तो therefore converse is true we would have written, but here we cannot write converse is true because that point C, ठीक है, C ये x equal to 0, that is C equal to 0 only. ठीक है, this all are the same thing only. चलो, तो आई होप दैट दिस थर्ड वन इज क्लियर, मीन्स दिस आंसर नंबर 2 थर्ड वन. नाउ लेट अस सॉल्व आंसर नंबर 3 विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. चलो, तो see, first of all, whatever is given in the question that I am writing. Okay, so here this particular question is having some different thing. Okay, it is not like same we were solving, so it is having some different things. So all of you just see, I am reading a question right now. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, चलो, तो इट इज गिवन दैट देर इज वन फंक्शन विच इज इन द क्लोज इंटरवल -5, and is differentiable. If it is differentiable, of course it is continuous. It is given already. f dash of x does not vanish anywhere. हाँ, अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, that point is very much important. f dash of x does not vanish anywhere. ठीक है, तो we have to prove that f of -5 is not equal with f of 5. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी है, we have to means it is necessary to verify 3 things. The first thing, that is, it must be continuous. Yes, it is differentiable, so it is continuous, right? So first point, second point, both are true. चलो, तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना होगा? थर्ड पॉइंट में एक ऐसा फंक्शन आएगा C, एक रियल नंबर आएगा, सॉरी, एक रियल नंबर ऐसा आएगा that will be belonging to -5, okay, that must be there. बट यहाँ पे तो ऐसा दिया है कि f dash of x does not vanish anywhere. इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग ये होता है कि f dash of x is there, ठीक है, f dash of x cannot be 0 anywhere. f dash of x जो है वो 0 हो ही नहीं सकता है. इसका मीनिंग ये होता है, दिस पर्टिकुलर थिंग जो है, that means f dash of x cannot be 0 anywhere. ठीक है, it is already given in the question. We have not written it by our own. This thing f dash of x cannot be 0 anywhere. It is already given, this line.
एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो एनीवेयर। अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो ही नहीं सकता है भाई, तो हम कैसे इसका डिफरेंशिएट, मतलब फंक्शन तो नहीं दिया हुआ है बट उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो लिख ही नहीं सकते हैं। देयरफॉर ये थर्ड कंडीशन जो है दैट इज वी हैव प्रूव्ड, बिकॉज ये थर्ड कंडीशन को जीरो होने के लिए तो ही हम एफ ऑफ माइनस फाइव और एफ ऑफ फाइव फाइंड करेंगे, राइट। बट एफ डैश ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो एनीवेयर, हैंस रोलेस थियरम फेल्स। ओके, एंड बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसे करने के लिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम ये स्टेटमेंट मैंने नहीं कहा था आप लोगों को, लेकिन हम एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट लेट अस एज्यूम एफ ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइव, ठीक है। ये एज्यूम करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एज्यूमिंग, देन व्हाट वी आर डूइंग एज पर द रोलेस थियरम, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रियल नंबर सी इन द इंटरवल माइनस फाइव कॉमा फाइव सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। देयर मस्ट बी सम रियल नंबर सी इन द इंटरवल, ठीक है, minus 5,5 where f dash of c is equal to 0. But according to the question f dash of x cannot be 0 anywhere, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, therefore we have to write our assumption is wrong. ठीक है, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट देयरफॉर रोलेस थ्योरम फेल्स एंड अवर आंसर दैट इज एफ ऑफ माइन इज नॉट इक्वल विथ एफ ऑफ फाइव दैट इज देयर। ओके, तो देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, उसके बाद हमने ये एज्यूम किया कि एफ ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइव, ठीक है। फर्स्ट दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑलवेज इट इज कंटिन्यूस, राइट। सो बट थर्ड कंडीशन के बारे में दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज गिवन एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो एनीवेयर। देयरफॉर हमने जो एज्यूम किया था दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग मीन्स एफ ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइव हमने एज्यूम किया था, अगर वो रॉन्ग है तो नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट देयरफॉर रोलेस थ्योरम फेल्स। ठीक है, so this was your particular answer number 3. Now let us solve answer number 4, but answer number 4 I hope so you will be able to do on your own. Now let us move with answer number 5.